Good morning, students. Here, this is a 12th standard bookkeeping and accountancy textbook, and for Commerce 12th, you have total 10 chapters for BK subject. First one, Introduction to Partnership Final Account. Last year, we have Sole Trading Partnership Account. This year, we have Partnership Final Account. Next, Not for Profit Consent. Then Admission, Retirement and Death of Partner. These three chapters are interconnected. After that, Dissolution of Partnership Firm. Then Bill of Exchange. Then Issue of Shares. Analysis of Financial Statement. And last one, Theory part, that is Computer in Accounting. Our first chapter is Introduction to Partnership and Partnership Final Account. Last year we have seen that there are various types of business: sole trading concern, partnership firm, joint Hindu family business, joint stock company, etc. etc. For 11th standard, you have sole trading concern. For 12th standard, you have partnership final account. Partnership final account means two or more partners, they come together, start a lawful business, or any one of them acting for all. या तो सभी मिलके बिजनेस को रन करते हैं, या तो उसमें से कोई एक पर्सन बिजनेस को कैरी करता है, बिजनेस में सब एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. दैट इज पार्टनरशिप फर्म. Let's see meaning of partnership firm. Partnership firm is an organization in which two or more person, कमीत कमी 2 किंवा जास्तीत जास्त जे काही लिमिट दिलेलं असेल ॲज पर दी ॲक्ट, पर्सन्स हे पार्टनरशिप फर्ममध्ये इन्व्हॉल्व्ह असतात. दे कॅरी अ लॉफुल बिझनेस, ऑफकोर्स फॉर प्रॉफिट. बिझनेस हा का स्टार्ट केला जातो? फॉर प्रॉफिट पर्पज. नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेंडी, two definitions are given. One definition given by Indian Partnership Act 1932 and second definition is given by Professor Handy. Now first one definition may easy for you, that partnership firm is nothing but a relation between persons. It's a lawful relation who have agreed to share profits of business. ते का एकत्र येतात बिझनेसचे प्रॉफिट शेअर करण्यासाठी. दॅट बिझनेस इज कॅरीड ऑन बाय ऑल, या तो पूरे मिलके बिजनेस को रन करते हैं, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और ओनली वन पर्सन में रन दी बिजनेस. दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस. नाउ सम फीचर्स आर गिवन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट वन, एग्रीमेंट. इट्स अ लॉफुल एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स and that agreement is known as partnership deed. Second one, number of partners. Minimum 2 members are required and maximum 50 members required to start a partnership firm. Minimum 2, maximum 50. Next, lawful business. Of course, partnership firm is a lawful business. It cannot undertake business which is not allowed by state. जो बिझनेस रजिस्टर नाही आहे तो बिझनेस पार्टनर्स स्टार्ट करू शकत नाही. नेक्स्ट पॉइंट, शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अँड लॉसेस. ऑफकोर्स दे स्टार्ट अ बिझनेस. The most important purpose to start a business is profit. Also, there may be chances of losses in the business, so that is also belongs to the partner. Now, next point is unlimited liability. The liability of all partners is unlimited. Unlimited means what? If the assets of business is not sufficient to pay the liabilities, then the personal property of partners can be used. बिझनेसमध्ये लॉस होत असेल आणि तो लॉस कव्हर करण्यासाठी जर बिझनेसचे असेट्स सेल करूनही तो लॉस कव्हर होत नसेल, तर जी पर्सनल प्रॉपर्टी आहे, दी पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कॅन बी युज्ड फॉर दी बिझनेस टू पे दी लॉस, टू पे दी ड्यूज ऑफ बिझनेस. That is unlimited liability. Next, registration. Registration is compulsory only in the state of Maharashtra. State of Maharashtra में जो partnership firms है, as per that registration of partnership firm is compulsory.
Joint ownership and management. Each partner is a joint owner of property of firm. So no partner can use the property for personal use. जो business की property है वो प्रॉपर्टी पार्टनर्स अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं यूज कर सकता. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट्स. ईच एंड एवरी पार्टनर वर्क एज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट. सभी पार्टनर्स मिलके डिसीजन लेते हैं बिजनेस में. एंड लास्ट वन, डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मीन्स फर्म वाइंड अप होना, फर्म डिसॉल्व होना, बंद होना. इफ अ पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म देन ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 days नोटिस. अगर फर्म को डिसॉल्व करना है सो बिफोर डिसॉल्विंग द फर्म they have to give notice to all the partners, that is 14 days notice. So I hope you understood the features of partnership firm.